हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 116। इसमें हमें इंग्लिश का एक पैसेज दिया है जिसको शॉर्ट एंड में ट्रांसक्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वी फियर देयर इज नो prospect of success for those who raise objection to the appointment and quite irrespective of the merits of the respective parties. We would urge the abandonment of obstructive measures and the entertainment of the suggested resort to threats. Full stop. Further enlightenment is necessary if matters are to proceed smoothly. Henceforward, full stop, it is pleasant to turn from this subject to the attraction of the countryside where there are numerous objects of entertainment and instruction for all who care to look for them. Full stop. The Jerry Builder has not yet begun his destructive work, and the monstrous things which he calls architecture, but which cause disappointment and grief to the genuine architect have not yet appeared
to ruin the prospect, full stop, the unspoiled beauty of nature still remains to compel our respectful administration and to demonstrate in silence against those whose object is to make money, even though it involves the destruction of the most glorious prospect, full stop। ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैप्टर का लिंक मैं वीडियो के एंड में दे रही हूँ, वहां जाकर आप अच्छे से चैप्टर को समझ सकते हैं और उसके बाद कोई भी डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हाइप का बटन दबाना मत भूलना, उससे मेरे चैनल को प्रमोशन मिलता है। और थैंक्स बटन को दबाकर आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।